Good morning, everyone. Now, today we are going to discuss scope of economics. The first one is traditional approach. Economics is studied under five major divisions, namely consumption, production, exchange, distribution, and public finance. Consumption में क्या है? The satisfaction of human wants through the use of goods and services is called consumption. Production. Goods that satisfy human wants are viewed as bundles of utility. Hence, production would mean the creation of utility or producing or creating things for satisfying human wants. For production, the resources like land, labor, capital, and organization are needed. Then exchange. Goods are produced not only for self-consumption but also for sales. They are sold to buyers in markets. The process of buy and sell is exchange. इसके बाद distribution. अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी. कंजम्पशन, द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट. प्रोडक्शन, जो आप चीजें बना रहे हो टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट. एक्सचेंज, बाय एंड सेल जो हो रहा है, जो भी आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उसकी सेलिंग, उसको मतलब उसको खरीदना बेचना, उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज. इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. द प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल कमोडिटी रिक्वायर्स फोर फैक्टर्स विद लैंड, labor, capital, and organization. These four factors of production are to be rewarded for their services rendered in the process of production. The landowners get rent, the labor earns the salary, the capitalist is given with the interest. Okay. जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है? आपको लैंड चाहिए होती है, आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. ओके. अब ये जितने भी फैक्टर, जो भी चीजें आप काम में ले रहे हो, जितनी सर्विसेज आप काम में ले रहे हो, उनको भी एक रिवार्ड दिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ओके. जैसे हम कहते हैं लेबर को सैलरी मिलती है, लैंड ओनर को जो लैंड आपको दे रहा है उसको रेंट मिलता है. ओके. द एंटरप्रेन्योर इज रिवॉर्डेड विद प्रॉफिट. द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. अब इन सारी चीजों को डिटरमाइन करना कि क्या रेंट हमें, क्या सैलरी होनी चाहिए, कितना लेबर हमें चाहिएगा, कितनी लैंड हमें चाहिएगी, कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, क्या प्रॉफिट हमें हो रहा है, ये सारे प्रोसेस को डिवाइड करना. ये जो हमने डिवाइड कर दिया एक पूरे काम को, कि भी हमने पहले कहा हमारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना है, उसके लिए हमने गुड्स प्रोडक्शन किया. प्रोडक्शन का बाय एंड जो सेलिंग जो होनी चाहिए, दैट इज एक्सचेंज प्रोसेस पर हम आए. उसके लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या काम का हमने क्या क्या डिविजन किया, और ये सब इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन. फिर आता है हमारा पब्लिक फाइनेंस. It studies how the organization gets money and how it spends it. Thus, in public finance, we study about public revenue and public expenditure. Example, share market, income taxes, etc. Okay. अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच पर. Microeconomics analyzes the economic behavior of any particular decision-making unit, such as a household or a firm. Microeconomics studies the flow of economic resources or factors of production from the households or resource owners to business firms and flow of goods and services from business firms to households. It studies the behavior of individual decision-making unit with regard to fixation of price and output and its reactions to the changes in demand and supply conditions. Hence, microeconomics is also called price theory. Microeconomics studies the behavior of the economic system as a whole or all the decision-making units put together. Macroeconomics deals with the behavior of aggregates like total employment, gross national product, जिसको GNP बोलते हैं, national income, general price level, etc. नाम से आपको differentiate कर पा रहे हो microeconomics that works on the low level, at short level. Macroeconomics that will deal with the higher level. Okay. So macroeconomics is also known as the income theory. उसको हमने क्या बोला? Price theory. इसको हम बोलते हैं income theory. Microeconomics cannot give an idea of the functioning of the economy as a whole. Similarly, macroeconomics ignores the individual's preference and welfare. What is true of a part of individual may not be true of the whole, and what is true of the whole may not apply to the parts of individual decision-making units. क्या difference है दोनों के बीच में? Micro means small, macro means large. Study of the individual behavior of mankind, like individual incomes, consumption, savings, and investment. इंडिविजुअल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, हमने जैसे कहा इट वर्क्स ऑन अ स्मॉल स्केल.
यानी कि इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी, उसकी इनकम, उसका कंजम्पशन, इसकी स्टडी जो है, इट कम्स इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ द नेशन एज अ लार्ज एंटिटी लाइक नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो हमारा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। The objective of microeconomics is the maximization of individual satisfaction and minimization of cost. The objective of macroeconomics is to govern the economic parameters of a nation like growth in national income, distribution, employment, etc. In microeconomics, judgments are based on demand and supply of individuals and business firms. Whether in the macroeconomics, judgments are based on aggregate demand and aggregate supply. In microeconomics, an analysis is based on the following assumptions. First, a rational judgment of the individuals. Second, keeping all the variables except one under the analysis as static. Macroeconomics, its analysis is, just a minute please. हाँ कमो बहन, हाँ आ जाओ ना। ओके, तो ये तो हमने देखा कि एनालिसिस किस पे बेस्ड है। नाउ डीलिंग विद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, डीलिंग विद द मार्शल इक्विलिब्रियम कन्फाइंड टू इंडस्ट्री कैटेगरीज एंड percolated to individual firms. Here, dealing with equilibrium establishment for a nation and also global equilibrium to global economic cooperation. Here, attainment of equilibrium under the shorter time span with the periodic adjustments for correcting the disequilibrium. Here, attainment of equilibrium under the long time span. The decision of today will produce the results after a long span of time. Okay. Then theory of demand and supply. Supply and demand are perhaps one of the most fundamental concepts of economics, and it is the backbone of a market economy. Demand, the quantity demanded is the amount of product people are willing to buy at a certain price. The relationship between price and quantity demanded is known as a demand relationship. Supply, the quantity supplied refers to the amount of a certain goods producers are willing to supply when receiving a certain price. The correlation between price and how much goods or services supplied to the market is known as the supply relationship. Price, therefore, is a reflection of supply and demand. ओके, ये हमने यहाँ पे दो रिलेशनशिप देखी, एक तो डिमांड रिलेशनशिप, एक हमने देखी सप्लाई रिलेशनशिप। ओके, डिमांड रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि पीपल की क्या मतलब नीड है, क्या मतलब क्या सर्टेन प्राइस पे वो जो है दे आर विलिंग टू बाय। ओके, सप्लाई में क्वांटिटी कितनी सप्लाई की जाती है और सर्टेन गुड प्रोड्यूसर मतलब हाउ मच क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई व्हेन रिसीविंग अ सर्टेन, उनको भी एक अमाउंट मिलना चाहिए तब वो सप्लाई करेंगे। ओके, तो ये एक को रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड हाउ मच गुड्स और सर्विसेज सप्लाई, इसको हम बोलते हैं सप्लाई रिलेशनशिप। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट आता है प्राइस। अब डिमांड पे क्या क्या मतलब, आप कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो फर्स्ट पहली चीज हमारे दिमाग में, कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हो अब यही पूछते हो क्या प्राइस है इसकी, है ना। तो पहली जो डिमांड है उस पर पहला फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है वो है प्राइस। तो प्राइस इज अ बेसिक फैक्टर विच अफेक्ट्स डिमांड। एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड विल इंक्रीजेस, एंड इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड विल डिक्रीजेस। ऑब्वियसली चीज है, कोई चीज अगर महंगी होती है तो हम अपना आप ही उसको अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार ये अभी नहीं लेना, ये तो बहुत महंगा चल रहा है। ओके, फिर आता है इनकम। इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन इनकम ऑफ अ पर्सन विल इंक्रीज द डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। जितनी इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी। फिर आता है डेमोग्राफी, पॉपुलेशन। एज पॉपुलेशन इंक्रीज डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। इफ अ पर्सन लाइक समथिंग देन ही विल डिमांड मोर, एंड इफ और शी डज नॉट लाइक इट देन रिफ्यूज टू बाय। Expectations of future price. If the consumer expects the rise in price, then he or she will demand more at this time and vice versa. Then prices of related commodities. The demand is also affected by the prices of the substitute products. Okay. इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है, क्या फैक्टर है जो सप्लाई को इफेक्ट करता है। तो अगेन इसमें पहला फैक्टर हमारा प्राइस आता है। इफ द प्राइस विल इंक्रीज देन द सप्लायर विल विलिंग टू सप्लाई मोर एज प्रॉफिट इज इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। कोई ज्यादा महंगी चीज होगी तो सप्लायर क्या करेगा, उसको ज्यादा बेचेगा क्योंकि उसे तो प्रॉफिट मिल रहा है। द स्ट्रेटेजी ऑफ द सप्लायर।
The strategies followed by the supplier determine the quantity released at different prices. Number of suppliers, the number of suppliers represents the market structure, is monopoly or competition which becomes the basis for the volume of supply. कितने सप्लायर्स है कोई प्रोडक्ट के, आज आप देखते हो ऑनलाइन मार्केटिंग में भी आप देखते होंगे कितनी चीजें एक ही चीज कितने मतलब अमेजोन पे बिक रही है, फ्लिपकार्ट पे बिक रही है, तो नंबर ऑफ सप्लायर्स पे भी डिपेंड करता है. फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, प्राइस कंट्रोल्स, इंसेंटिव्स टू बाय कंज्यूमर and industrial products affects the supply of commodities. Then technology development and adoption. The technology advancement facilitates large production at low cost. This factor affects both the consumers and the suppliers. Then future expectations. The future expectations about price rise or price fall prompts the supplier to restrict or to release the supply respectively. Natural calamities, the natural calamity like flood, drought, cyclone, earthquake, etc. destroys the supply. Thus, the quantity supplied is determined by these factors. Okay. Okay. Then आता है हमारा law of demand that we will discuss in next lecture. Thank you everyone.